हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नया बैकग्राउंड लगा हुआ है। दिस इज़ नॉट माय रूम, दिस माय सिस्टर्स रूम। आई हैड टू चेंज द बैकग्राउंड क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हैं और मेरा ही रूम मिले ऑफ कोर्स रहने के लिए। सो गेट विद द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इटली हैज़ लॉस्ट टू बॉस्निया इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर फाइनल्स। दिस इज़ द थर्ड टाइम इटली हैज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप इन अ रो। ना उन लोगों ने 2018 में वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया है, ना 2022 में किया है, ना अभी 2026 में भी नहीं किया है। क्रेजी। I mean, genuine fact है ये. Last goal Italy scored was by Mario Balotelli against England in 2014. Crazy stat. अभी जेन्युइनली बोलते हो इटली नॉट क्वालिफाइंग फॉर अ थर्ड वर्ल्ड कप इज क्रेजी। आई मीन उनके टीम को देखो भाई, जस्ट जेन्युइनली लाइक जस्ट लुक एट, दे हैव डमफ्रीज, डी लोरेंजो है, बास्टोनी है, बारेला है, डोनारूमा है। डोनारूमा इज प्रॉब्ली द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इतना स्टैक टीम है भाई, स्टैंडो टोनाली और भाई कौन कौन नहीं है टीम को बोलो भाई। They have some of the best players in the world, and yet they're still losing. Just to put into perspective, बॉस्निया में पर्सनल मैं चीज़ बोलता हूँ, बॉस्निया के मुझे बस तीन प्लेयर पता है: पियानिच, जेको और कोलासिनच। और पियानिच इज रिटायर्ड, डजंट इवन प्ले फॉर बॉस्निया एनीमोर। और जेको भाई बुढ़ा हो गया है बंदा, तब भी अभी तक खेल रहे। बट रिगार्डलेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बॉस्निया फॉर क्वालिफाइंग फॉर अनदर वर्ल्ड कप, बीटिंग इटली 4-1 ऑन पेनल्टीज। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ बास्टोनी। नाउ बास्टोनी, आई मीन समहाउ उसको बिग गेम्स में आई डोंट नो हमेशा हकता है। यूसीएल फाइनल में दे लॉस्ट 5-0। आई एम नॉट गोना ब्लेम हिम, ही वाज नॉट द ओनली वन एट फॉल्ट। आई वुड से ही डिडंट हैव अ हॉरेंडस परफॉर्मेंस, लेकिन तब भी भाई रेड कार्ड। और भाई लुक एट दैट टैकल, ही वाजंट इवन गोइंग फॉर द बॉल, किसी का कत्ल करने जा रहा था भाई। If you know about transfer rumors, you know that Bastoni is being hunted down by some of the biggest clubs in the world, but especially by Barcelona because he's such a desirable target. बट ये परफॉर्मेंसेस देख के भाई थोड़ा डर तो लगता है। आई मीन अगर ये परफॉर्मेंसेस करने हैं तो वी ऑलरेडी हैव अराओ हो, बास्तोनी की क्या ज़रूरत है। बट स्टिल अगर बास्तोनी को लाना है टीम में, ही वी आर ब्रेकिंग हिम टू फिल अ गैप विच इज़ ऑफ कोर्स लेफ्ट बाय द मिथ, द लेजेंड इनीगो मार्टिनेज। I mean, bhai, if you were actively watching Barcelona in the 24-25 season, you would know how important Inigo Martinez was to our season. Every single offside trap, he was a part of it. Him and Kubarsi, bhai, क्या खेल रहे थे भाई. It's like you could not get past them. I mean, you could get past them, you could not score a goal because हमेशा goal offside होता है. This is the statistical comparison between Inigo Martinez and Alessandro Bastoni. अगर टोटल अपीयरेंसेस देखते हैं, देव हैड रफली द सेम अमाउंट ऑफ अपीयरेंसेस विद बास्टोनी हैविंग 48 एंड इनिगो मार्टिनेज हैविंग 46। तो दीज स्टैट्स आर वेरी मच कंपेरेबल। गोल्स एंड असिस्ट इतना मैटर नहीं करता, बट one thing I would like to point out is that they both have the same amount of assists, which shows that Bastoni can also provide the same attacking threat that Inigo Martinez did, especially doing corners and whatnot. अगर passes per 90 देखते हैं तो Inigo Martinez does have a higher passes per 90 than Bastoni, but Bastoni has more progressive passes than Inigo Martinez, which is something very important for a Barcelona side that is completely focused on attack. और बाकी जो स्टेटिस्टिक्स है, आई वुड से दैट बास्टोनी इज एक्चुअली मच बेटर देन मार्टिनेज। तो बट माई पॉइंट बीइंग इज दैट आई फील बास्टोनी वुड इज amazing at replacing Inigo Martinez. He is the perfect fit. I mean, one great thing about Bastoni is his positioning, which is ideal for when you are playing a high line with offside traps continuously for the entire 90 minutes. And I feel Flick Bastoni को भाई मोल्ड कर सकता है मार्टिनेज जैसे प्लेयर के जैसे। जस्ट इमेजिन हिम एंड कुबारसी लाइक टीमिंग अप, नो टीम कैन गेट पास दैट। इट विल बी लाइक 24-25 ऑल ओवर अगेन। मज़ा आएगा भाई देखने में, मतलब इट्स प्योर फुटबॉल मैजिक, especially with Bastoni's progressive passing, his ability to pass, and his physical dominance with height and strength. उसका midfield जैसा presence in that 11. There is not a better replacement for Martinez in Europe than Bastoni, I personally feel. And another factor I would like to mention is that I feel this, I think I might be wrong on this, but मुझे लगता है, जितना लगता है कि Italian players और Spanish players के ideologies बहुत similar है। I mean, एक तो है language similar ही है। I mean, Italian and Spanish, they are similar languages. But my point is that their footballing philosophies are not too different, practically speaking. Nowadays, basically every team wants to play that beautiful football.
that Barcelona once had and now continues to have. And with this shift, I feel almost every team is attempting to like change their philosophies into that tiki taka philosophy. तो इसके लिए मुझे लगता है कि भाई इटालियन टीम्स भी जो है दे आर डूइंग समथिंग सिमिलर ऑफ कोर्स. So they have especially moved away from their cold defensive methodologies of the past. आजकल कोई तो मस्त इटालियन डिफेंडर दिखता नहीं है, and that's because of their philosophical change. And if Bastoni were to come to Barcelona, he would not make history by being the first Italian player to come to Barcelona. So I feel एक level of comfort भी है. So basically what I'm saying is that Bastoni is a player I'm basically in love with. And I think he would be perfect for Barcelona, for Flick, and for to us to maybe win that sixth Champions League. So anyway, that's the end of the video. Thank you for watching my football rant basically on Bastoni and the transfer rumor of him coming to Barcelona. As I mentioned before, मैं चाहता हूँ कि बास्तोनी बार्सिलोना में आए. He is a great replacement for Inigo Martinez. I feel he fills the gap perfectly. And मैं चाहता हूँ कि उस टाइप का प्लेयर अगर हमें मिल जाए, with God's grace, we'll win another Champions League. So thank you for watching and see you next time.